In this video, we will solve this question, and the question is integration of modulus of x and limits are -2 and 2. So this integral is a definite integral, and इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं. First, by using property of this modulus function and by using property of the definite integral. So ये दो मेथड है जिससे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. So let's first solve this question by using the property of this modulus function, or I can say the definition of this modulus function. So to solve this question by using the first method, you should know about modulus function. So modulus function has two definitions. So modulus function will be equal to minus x if x is less than or equal to 0 and x if x is greater than 0. These are the two definitions of modulus x. Now you can clearly see ये जो function है modulus x इसका दो definition है, and for x less than or equal to 0 we should use the definition minus x, and for x greater than 0 we should use the function x. सो इन आवर क्वेश्चन यहाँ पर -2 से 2 तक लिमिट है. सो इसके अंदर में नेगेटिव नंबर्स भी है एंड पॉजिटिव नंबर्स भी है. मतलब देयर आर नंबर्स लेस देन 0 एंड देयर आर नंबर्स ग्रेटर देन 0. देयरफॉर वी विल स्प्लिट दिस इंटीग्रल. इस इंटीग्रल को हम लोग दो पार्ट में स्प्लिट कर लेंगे एंड वी विल स्प्लिट द इंटीग्रल एट 0, क्योंकि फॉर लेस देन 0 फंक्शन इज -x एंड फॉर ग्रेटर देन 0 फंक्शन इज x. देयरफॉर वी विल स्प्लिट द फंक्शन एट 0. सो दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ -2 से 0 एंड 0 से 2 प्लस. सो ये भी बेसिकली एक प्रॉपर्टी है. सो फर्स्ट लेट मी डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी. सो इफ देयर इज अ इंटीग्रल फ्रॉम a टू b, सो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है इस फंक्शन का फ्रॉम a टू b. सो वी कैन ब्रेक दिस इंटीग्रल इनटू टू पार्ट्स. फॉर दैट लेट्स से देयर इज अ एलिमेंट c. सो वी आर इंटीग्रेटिंग फ्रॉम a टू b. सो लेट्स से देयर इज अ नंबर c in between a and b, and I want to split this integral at c. So we are integrating between a and b. But let's say there is a point C in between A and B. So we can split this integral at this point C. So the first integral will be from A to C and the second integral will be from C to B. So the first integral will be from A to C and the second integral will be C to B. And function दोनों में same रहेगा f of x. इसीलिए f of x dx. So if we are integrating from A to B and if there is a point in between, let's say that is C. So we can split the integral into two parts. And the first integral will be from a to c and the second integral will be from c to b. Hence a to c and c to b. ऐसे हम लोग कोई भी इंटीग्रल को हम लोग दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं. So we will apply this property in our question. So in our question at 0 the definition of the function changes. Less than 0 में फंक्शन क्या है -x and greater than 0 में फंक्शन क्या है x. Therefore we will split this integral at 0. इसीलिए हम यहाँ पे -2 से 2 लिखा है एंड यहां पर 0 से लेकर 2 लिखा है. ठीक है. सो बेसिकली वी आर स्प्लिटिंग एट 0. सो इन नंबर लाइन -2 एंड 2 एंड बीच में क्या है 0 है. सो वी आर इंटीग्रेटिंग -2 से 2 एंड 0 से 2, बिकॉज लेस देन 0 में फंक्शन क्या है -x एंड ग्रेटर देन 0 में फंक्शन क्या है x. इसीलिए वी आर स्प्लिटिंग एट 0. सो यहां पे फंक्शन क्या आएगा, यहां पे फंक्शन आएगा मॉडुलस x. फंक्शन क्या आएगा मॉडुलस x. नाउ सो यहां पर इंटरवल क्या है -2 to 0. This interval is basically less than 0. So for less than 0 we should put modulus x as -x, क्योंकि modulus x is -x for x less than 0 and this interval is less than 0. Therefore we will put -x in place of modulus x. Similarly यहाँ पर modulus x का जगह पर x put करना है, क्योंकि this interval is greater than 0. Therefore for greater than 0 modulus x is x. Therefore we will put x in place of modulus x in this integral. So this will be -2 to 0 and modulus x की जगह पर -x पुट करना है dx, and this integral is 0 to 2 and यहाँ पर modulus x की जगह पर x पुट करना है. सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा. नाउ वी कैन इंटीग्रेट दिस टू इंटीग्रल. अब इसको इंटीग्रेशन करना बहुत इजीली पॉसिबल है. नाउ लेट्स टेक दिस -1 आउटसाइड द इंटीग्रल. सो दिस विल बी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ -2 से 0 x into dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 x into dx. Now what is integration of x? To solve this integration we will use the formula of integration of x power n, and integration of x power n is x power n plus 1 divided by n plus 1 and plus c. So यहाँ पे प्लस से पुट नहीं करना क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है. So integration of x is x square by 2. So यहाँ पर x square by 2 आएगा. And what was the limits? Limits are -2 से 2 and सामने -1 मल्टीप्लाइड है and प्लस. Similarly यहाँ पर भी x है. So x का इंटीग्रेशन क्या होगा x square by 2 and then limits 0 and 2. Now first we will put this upper limit in the function, then we will put lower limit in the function. So minus
If you put 0, you will get 0 by 2 minus, if you put -2, -2 को यहाँ पुट करने से -2 का स्क्वायर विल बिकम 4, बेसिकली 4 by 2, देन प्लस यहाँ पर अगेन अपर लिमिट पुट करना है, देन माइनस, देन लोअर लिमिट पुट करना है. सो 2 पुट करने पर यू विल गेट 2 square by 2 which is 4 by 2, देन माइनस लोअर लिमिट पुट करने पर यू विल गेट 0 by 2 which is 0. सो ये क्या है बेसिकली 0 एंड ये क्या है 2, 4 by 2 is 2. सो 0 minus 2 is -2. सो इसका वैल्यू क्या है -2. -1 into -2 is 2. नाउ इसका वैल्यू क्या है 2. 2 minus 0 is 2. सो इसका वैल्यू क्या है 2. सो प्लस 2. सो 2 plus 2 is 4. 4 is the answer for the given integral. So we have solved this question by using the definition of modulus x. So यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या किया, जो इंटीग्रल था उसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया. So किस पॉइंट में स्प्लिट किया हम लोग, जिस पॉइंट में फंक्शन का डेफिनेशन चेंज होता उस पॉइंट में स्प्लिट किया था. एंड उसके बाद मॉडुलस ऑफ एक्स की जगह पर -x पुट किया था इन द फर्स्ट इंटीग्रल, एंड देन मॉडुलस ऑफ एक्स की जगह पर +x पुट किया था इन द सेकंड इंटीग्रल. उसके बाद सिंपली इंटीग्रेशन हो गया था. ठीक है. सो दिस वाज बेस्ड ऑन डेफिनेशन ऑफ द मॉडुलस एक्स. ठीक है, ये पहला मेथड है. एंड इसको सॉल्व करने के लिए वी हैव यूज्ड द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल, जिसमें हम लोग इंटीग्रेशन को दो पार्ट में स्प्लिट किया था. उसके बाद मॉडुलस एक्स की जगह पर रेस्पेक्टिव फंक्शन पुट करके सॉल्व किया था. ठीक है. नाउ वी विल सॉल्व दिस इंटीग्रल, द सेम इंटीग्रल, बाय यूजिंग अनदर मेथड. We will use a different method, a different property to solve this integral. So to solve this integral, we will use this property. So the property is integration of -a to a f of x. So जब भी कोई भी इंटीग्रल इस फॉर्म में दिया रहेगा, in that case we can use this property. And ये जो इंटीग्रल है इसका दो रिजल्ट होते हैं based on type of function. If the function is odd function, there will be a specific result, and if the function is even function, there is a specific result. So for that we need to check whether the function is odd function or even function. First let me write the results. So the results are 0 and integral 0 to a and 2 f of x. ये दो result है. So when the function is odd function, the answer is 0, directly 0. And when the function is even function, we can transform this function, or I can say this integral, into this form. So this condition is when f of x is odd function. And we will get this when the function is even function. So how to check whether the function is odd and even function? For that we will find f of minus x. We will find f of minus x. If f of minus x is minus f of x, the function is odd function. And if f of minus x is f of x, the function is even function. So these are the conditions to check the function whether it is odd function or even function. If even function, we should apply this form. If odd function, the answer is 0, directly 0. So let's first check whether the function is odd function or even function. For that we have to find f of minus x. So ये है f of x. What is f of x? F of x is modulus of x. So what we will do, we will put minus x in place of x. We are putting minus x in place of x. So यहाँ पर भी क्या आएगा, modulus of minus x आएगा. And what is modulus of minus x? Modulus of minus x is modulus of x. And modulus of x is f of x. So let's put f of x. So f of minus x is basically f of x. ठीक है, मेरे को क्या मिला, f of minus x मेरे को मिला f of x. So now we got this condition, which is this condition, and when we get this condition we say that the function is even function. So ये जो function है ये क्या है, even function है. So we have to apply this form in this integral. So -2 to 2 modulus of x dx. ये था question. We got that the function is even function, so we have to apply the form 2 0 to a. In our case a is 2 f of x dx, and f of x is modulus of x. So we got even function, therefore ये जो इंटीग्रल है ये कुछ ऐसा बन गया. Now again we have to use the definition of modulus function. So you can clearly see ये जो इंटीग्रल है ये 0 से लेकर 2 तक है, which means this integral lies at greater than 0, because 0 to 2 is means greater than 0. Therefore we will put x in place of modulus x, because for x greater than 0 we should put x in place of modulus x. ठीक है. Therefore we will put x in place of modulus x, क्योंकि obviously जो इंटरवल है वो more than 0 है. So 2 0 to 2 x dx. Now integration of x is x square by 2. So 2 into x square by 2, 0 to 2. Now we can cancel this 2, क्योंकि जो भी कांस्टेंट है उसको हम बाहर निकाल सकता. So यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट है. So 1/2 कांस्टेंट है, उसको अगर हम बाहर लाते हैं तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा. Therefore हम ये 2 को कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्टली. Now we will put limit, upper limit and lower limit in the function x square.
So if you put 2 in place of x square, you will get 2 square, minus if you put 0 in place of x square, you will get 0. So upper limit and lower limit put करने के बाद I got this. So 2 square is 4 minus 0 is 4. So ये है answer. So you can choose any method to solve this integral. You will get the same answer. But be careful, ये जो second method है ये हर जगह apply नहीं होगा, because to apply this property the integral should be in this form. इस फॉर्म में रहने से ही ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हम लोग. सो यहाँ पर जो इंटीग्रल दिया हुआ था उसका लिमिट्स क्या था, -2 and 2 था, इसीलिए हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर पाया. बट हमेशा ऐसा नहीं होगा. सो जब भी इंटीग्रल इस फॉर्म में नहीं दे रहेगा, वी कैन गो फॉर द फर्स्ट मेथड. सो दीज वर द टू मेथड जिसका यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. सो दिस इज इट फॉर द वीडियो. वी विल सॉल्व मोर क्वेश्चंस based on properties of definite integral in our upcoming videos. So stay tuned for the next video. Thank you for watching this video.